Okay, now in this session, I'm going to tell you about the collections. Okay, so first of all, let me show you what is collection. So let me create a new file for that. Class collections collections demo. So I always try to create a demo class so that I can give you the understanding of a topic. So now you will see that we have already learned a concept of collection, and that is called array. Yes or no? We have learned a concept of collection like array. Yes or no? Yes. What Yes. was the purpose of array? To store the multiple elements with the help of single reference variable. And you can say simple words. Whenever you want to store multiple values or multiple objects with the help of single reference variable, we use the concept of array. Yes or no? So now the question is that what were the two limitations? I will not say the drawback. What were the two limitations of the array? Yesterday we discussed about that. Same. Yeah. Yeah, it should be same data type. Say Yes. homogeneous Yes. data. So first thing is that the data type should be same. Like whenever you are declaring the array, you are declaring it in type. Means all the four elements, whichever you want to store it, all elements should be of integer type. If you are declaring the array of a string type, all the elements will be of array, string type. So it means something like it is called homogeneous. Yes or no? Yes or no? So, Yes. Yes. so this was the first limitation. Second limitation was that, suppose take the example, we have declared the array of 4. And now in the future, if I will try to at runtime, suppose take the example, I will try to store the value more than it. Okay. So I can give the example like you can say at runtime, I've stored the value A0 equal to 1. That is okay. A1, I've stored it. Suppose take the example of 3. Then I store A. I store 2. Then I store it 5, then I store A, then it's 3. I hope I have completed 3. Yes or no? Oh, sorry, 4 elements. Yes. But you will see if I will try to write A4, I am getting any compilation error? No, it is not stopping me. Yes or no? I'm able to write A4 equal to 8. Even Yes. I can write A5 equal to something like that. Yes or no? But you know that whenever you declared an array, you have taken a 4 BHK, you can't expect more than that. So at runtime, this program will terminate it. And that is also example of runtime exception. And what is that? Array index out of bound. What is that? 4. Yes or no? Yes. So now you have learned one more example of runtime exception that is called array out of the bound. So now here I want to tell you, you want any magical collection where at runtime you can store multiple values and nobody is going to stop and any termination is required. You want that type of collection, magical collection, yes or no? Yes. So that's why Java introduced a new concept for the collection, and that is called collection framework. So collection framework is nothing, means say for handling these type of situations in Java in programming, they have created so many classes, they have created so many interfaces, and using those interfaces classes, you can achieve so many things related to the collection. Like they have provided the various type of collection, and they have provided various type of features are there. They have provided sorting feature, they have provided ordering feature. So many things they have provided by creating a bunch of classes and interface, and this whole group is we know it as a collection. So basically in our automation and in our testing, we are going to cover three special concept here. One is called list, one is called set, and third concept is called map. So we are going to cover their log. You can say collection is a very big, you can say just like a net. In the net, we have so many concepts of the collection, but we are going to cover the important one that is utilized in our automation, and that is called list, set, and map. So now the question is, what do you mean by list, set, and map? So first thing is that list. So what is the list? Whenever you are trying to store or making a collection of elements, and you want to make sure that your duplicate element should be considered. Like I want to store few elements, 4, 5, 6, sorry, 6, comma 4, comma 2, comma suppose 3, and let me write comma 5. So how many elements are here in my collection? How many elements are there? 7. 7 elements. So what happens that whenever you are storing the element, and you can see the element 4 is duplicate and element 5 is duplicate, right? Right.
So in the list, whenever you have a requirement that you want to store the multiple elements, and you want to make sure that if you are trying to store some duplicate element, that should also considered by the collection, then we use the concept of list. Second thing is that if you want to make sure that you want to make a collection of elements, but at the time of storing, you want to make sure that accidentally if you have added any duplicate element, but that should not be considered by the collection. In that case, you use the concept of set. What is going to be happen if you are try to add the elements in your collection like 4, 5, 6, comma 4, comma 2, comma 3, comma 5? You will try to store, but finally what will be stored? Let me show you. 4, comma 2, comma 5, comma 6. Duplicate, oh sorry, 3 or more. So duplicate elements will automatically eliminated. Are you getting it? You don't need to do anything for that. That will be automatically taken care by Java. Whenever you are telling the Java, I want a concept of set. Is it okay? Yes. So now the thing is that how these things are, how these features we can use in Java. So first of all, to get the feature of list, Java created a class and we call that class ArrayList. ArrayList. So this is the name of the class, which is actually available in a package that is called, okay, why it is not giving? So let me write. Okay, now this is available in this one, Java util. Okay, don't use this one, your array list. Where is array list? This one, Java util. Is it okay? This is the name of the class. For time being, just forget about this one. What is E? I will tell you about that. But the name of the class is ArrayList, and here you have to give any reference variable. So I'm just giving the name ArrayList and simply new ArrayList. Is it okay? So Yes. whenever you are creating an object of this class, it is equivalent that you have created a array. जैसे array में क्या करते थे? Something like that. Let me try to compare. Int ARR, and you are writing new int, and you are writing 4. So here, what is the array reference variable? ARR. What is the name of the array reference variable? ARR. And what is the reference variable for array list? This one. Okay. Yeah. Okay. So here you are giving the data type int. Are you giving any data type here? Not mandatory. Okay. Are you giving any size here? Not mandatory. But here it is mandatory. Yes or no? Yes. Now see that how you can store the data in the array list. For storing the data in the array list, like this reference variable, they have given the function. Okay, so you can simply call the function. Like in the array, if you want to store any element, you simply say that ARR0. You use the index for that. Yes or no? Yes. But in the array list, because they have created a specific class for that, so they are saying that whatever you want to perform, you don't need to do it directly. Just call the function. So if you want to add any element, just call the function add. So are you able to see that when I'm calling the add function, what is that parameter type? Object. Object means you can add any element, any type of element you can add it. देखो मैं यहाँ पे store करता हूँ 4. Am I able to add? Yes or no? Yes. You want to add one more element, you have to call the same function one more time. Let me call it. Let me add 4. Again, let me add 4 elements. 4, 4, then I will say 5, then I will say, suppose take the example, let me say again 3, and let me add let me add one more element to make it more interesting. 4, 4, 5, yeah, let me add one more 3. Okay, now I will run this code. Before, let me print the values which is stored in the array. How you can print it? Simply make a SOP and print the array list, ARR list. And I'm going to run it. Just tell me what you are able to see on your console. Are you able to see the elements 4, 4, 5, 3, 3? Yes or no? Yes. So with the help of array list, here you are storing the element ARR, and here whenever you are using the array list, you simply use the function add to store the element. And if you want to get the element, like in whenever in the array you want to get the element, you simply write ARR 0. You can store it, or you can simply print in the SOP. Yes or no? So this is simply going to give the value of ARR. If you want to slice some value, you write equal to something. Yes or no? Yes or no? Yes. Can we add in ArrayList string as well?
In array, everything in the array list, we are going to talk about that same thing here. If you want to get the whole array list, you can call it this one. If you want to get the specific element, you will call the element get, and you are passing the index. So actually index means whenever you are using array list, it actually follows the same index. Like first element goes just like the array. First element goes to the 0 index, then 1, then 2 and 3. You are interested to get the particular element, just write it get, and you can say suppose 2. Which element you will get it here? 5. So let me run it and you will get the answer for that. What is the element for that? So you are getting the element 5. Yes. Because 0, 1 and 2. So in the array list, whenever you are going to add the element, the function is add. Whenever you are going to fetch any particular element, you can fetch on the base of indexing. So that is the interview question, that behind the scene array list uses the array. Array list पीछे से क्या यूज करती है? Array को ही यूज करती है, लेकिन पीछे से आपको नहीं दिखाई दे रहा. That is your not your concern. Is it okay? हाँ जी, yes or no? Yes. And if you want to get the size of the array, like how many elements are there, there is a function that is called arrays dot size. And if you, it will give the number of element which is available in the array list. So you will get the answer, you will get it, that is 5. Why it is printing the 8? Let me remove this thing, otherwise it is making confusion for you guys. You are getting 5, yes or no? Yes. In And array now, list, all the entries are integer type, right? If yeah, I want- yeah. So yeah. Okay, tell me with that thing also. Currently, I'm doing it, but if you want, you can make it heterogeneous 4.5 f. This is numeric, Yes. and let me write it da 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 da. Okay. Pradeep, it is a string, yes or no? Are you Yes. getting any error? No. And you can see all sizes are also there. And if you want to see the elements are stored in the array, so let me print the whole array list, and you will see elements are stored there. Are you able to see the different type of elements in my array? 4, 4.5, 5, Pradeep 3. Yes or no? Yes. Okay, so this is the, you can say array. They have given a flexibility. You don't need to give the size, as well as you don't need to give the data type. It doesn't mean that this is a good thing. This is not a good thing, but definitely they have given the flexibility. Okay, I will come to that point also, but before that, let me show you one thing. If I'm going to achieve the same thing, but I want to avoid the duplicacy, in that case, the concept is known as set, and set is defined in Java with the help of a class that is called HashSet. What is the name of the class? HashSet. Okay, so I'm calling my set equal to new HashSet. And it also contains the same function add. So I will do a very interesting thing to tell you that it is working fine or not. So let me do one thing. Let me copy same code here, but instead of using the array object, I will use the my set.add. Is it okay? Yes. And you will see that benefit is there. If I'm going to store it, what is going to be happen here? Just let me run it. So everything will be same, like you are able to see that. It is able to accept every type of data, right? One thing I want to show you, if I'm going to write it 4. So how many elements I've stored? 2 with the duplicacy, 4 and 4. Yes or no? Yes. And let me write it 5 also. So actually I'm trying to store the 5 element, 4, 2 times 4, 1 time 5, then Pradeep, then 1 more time 5. But actually you will see when it will store, what value it is going to store. Let me show you. Let me print my set, and you will be surprised. You are storing the duplicate, but it is not going to consider that. How many values you are able to see in my set? कितनी values दिख रही हैं? 3. It is ignoring the duplicates. Duplicate one. So now the thing is that whenever in your collection, everything is same. But if you want to ignore, like you want to say that in my program, I will keep on adding the duplicates, but it should not consider the duplicate. So that's why this is the safest way, is that this one. That's why in the programming, sometime they will ask you, can you tell me how many unique values are in your array? So you can simply do one thing, just fetch the value from the array and try to store in the hat set. And when you store the set, it will only pick the unique values. Yes or no? Yes. So these type of question they can ask me, so that you can take the help of one concept to get the values, to store the value. So it depends on you that what is the logic, and you can use the combination of these concepts. So this is the one thing. I'm not going to cover the map right now, but before that, let me show you other things. Like I've told you,
It is a flexibility that you can store you can store any type of data here. But at the same time, are you able to see there is a yellow line? Yes. And what do you mean by yellow line? I told you, yellow line means it is alert. It is alert. And alert means not recommended. Alert means Not. not. So ये क्या कह रहा है? It is trying to tell you, if I put the cursor here, anybody read the alert for me? ArrayList is a It's a raw type. References to generic type. ArrayList should be parameterized. So it is saying that I understand that you are trying to add with the help of this array list. With the help of this array list, actually you can add different type of values. But my suggestion is that don't make this habit, because this is not a good habit. Whenever you are trying to create a collection, your collection type should be same. Are you getting my point? And that is a real example. Whenever you go to the market, you always try to define. आप बोलते हो ना, आपकी wife बोलती है, always try to say that, can you bring some item of the grocery? Can you bring some item related to the, you can say, kitchen? Can you bring some item related to the washroom? Some related to the electricity. So I always they try to define a generic. Generic मतलब उसका gender बताते हैं ना, आप क्या मंगाना चाहते हो? Yes or no? हाँ जी, yes or no? And that is also good habit. Then whenever she or he is going to give you a list, वो आपको बताते हैं कि देखो ये मैंने एक लिस्ट अलग बना दी है तुम्हारे किचन के आइटम की, ये मैंने इलेक्ट्रिक आइटम की अलग बना दी, so that you can go different places to handle different things. Yes or no? एक ही जगह ऐसा नहीं करते ना कि ग्रोसरी की दुकान में उसको लिस्ट पकड़ाना, पता चला उसने बोला भाई इसमें तो लिखा है एक आई नीड अ टैब, ग्रोसरी वाला 1 किलो he is going to measure 1 kg sugar, and then he's saying अरे टैब तो हमारे पास है नहीं. So it is a standard that you should keep your different type of items in the different list, and the generic of that, the base of that list should be same. Yes or no? मेरी बात समझ में आ रही है? Little bit. Little bit. So again, let me tell you. अच्छा, आप मुझे बताओ, whenever you are going to try a list, so list में हमेशा आप list word का use करते हो, तो उसके साथ एक बताते हो ना किसकी list? Yes or no? Student की list, books की list. Yes or no? What is book? What is student? That is the gender. That is the generic type. Yes or no? Yes. तो आप एक जेनरिक बनाते हो. यहाँ पे मैंने जो आपको आइटम बनाया, इसमें कोई जेनरिक नहीं है. इट कंटेन्स स्ट्रिंग डेटा, इट कंटेन्स न्यूमेरिक डेटा, इट कंटेन्स कैरेक्टर डेटा, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल. ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सम टाइम विल गिव द रियल प्रॉब्लम. अगर मैं आपसे कहता कि इसमें इनका सम करो, तो आपको लगता है इसमें सम हो पाएगा? इट विल बिकम अ कॉन्केटिनेशन. यस और नो? Yes. क्योंकि मैं तो सब तरह का डेटा डाल रहा हूं. बट इफ आई नो दैट दिस array list contains the only the numeric elements, definitely there will be a arithmetic operation, means the addition of number. Yes or no? Yes. तो this type of problem, whenever you say that, whenever you feel it, तो आपको एडवाइस देता है कि आप करने, फ्लेक्सिबिलिटी तो दी है मैंने, वट एवर यू वांट टू डू इट जस्ट डू इट. लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा मत करो. ऑलवेज ट्राई टू मेक योर कलेक्शन एज ए जेनरिक. तो देखो ये येलो एरर अपने आप चली जाएगी यहाँ से लाइन नंबर 13 से. इफ आई विल मेक अ, वी कॉल इट डायमंड ऑपरेटर, और यहाँ पे दे दो जो आपको डेटा बनाना है. ओके, सो मेरे को इफ आई वांट टू मेक श्योर कि इसमें मेरा केवल इंटीजर वैल्यू जाए, देन यू हैव टू राइट INTGR. Now tell me, your alert is gone from line number, and you have to do it on both the side. Your alert is gone from line number 13 or not? Why we not wrote that one int? Yeah, that is the special thing here. Whenever in the collection, what is happening whenever you are using a collection, the collection, there's a condition that you can use only you can say non-primitive data type. I have told you about the non-primitive and primitive. I have told you, I'm asking you guys, I have told you, discuss about the things. What is primitive data type and what is non-primitive data type? Say no. Array, say no. Oh, brother. You guys don't have a confidence because you are not revising. That's why you're not able to say Pradeep, I've covered or not. So I have not covered. I will tell you about that. But you can say, I will tell you right now. So here you can say whenever you have you can say whenever you are using a collection, in the collection, you are not allowed to use the, you can say primitive data type. What is the primitive data type? Let me give you the little bit idea. Every data type you can say define in two ways. If you want to define an integer variable, you can write int a. Is it okay? And you can use the integer, you can store any integer value like 4. And you can define the same thing in another way, that is called integer. And the purpose of this is also, the purpose of this integer is also to store the data. Are you getting my point? If I will try to make a, let me do one thing. If I will try to store the, are you able to see I'm able to store 4 value here
and 5 value here also. Yes. Even I can store the 4 here also. Yes or no? Yes or no? Yes. So I will tell you what is the difference here. Actually, you know that Java is a pure object-oriented programming language. Whenever this question is asked in the interview, the answer is not 100%. Answer is not 100%. Java is not pure object-oriented programming language. Reason is that in Java, when it will be treated as a object oriented programming language, when everything will be treated as a object. जब हर चीज को हम क्या मानेंगे? Object. खाना पीना उठना बैठना, everything will be treated as a object. But if you see in my Java, we have a data type concept, and data type concept are divided in two parts. If you want to define any integer value, you can define it in this way: a small int, and this small int is known as primitive data. It is called Primitive data. data type, and the purpose of primitive data type is only to store the value. इसका पर्पस केवल ये था आपके लिए इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर दे. तो आप पूछोगे प्रदीप फिर इसका क्या पर्पस है? सो हियर यू कैन से द सेकंड थिंग इज दैट वेयर योर डेटा टाइप इज आल्सो प्रेजेंटेड जस्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट. आपके डेटा टाइप को भी कैसे प्रेजेंट किया गया है कि वो क्या है? रियल लाइफ के एक ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव. सो आई विल शो यू द डिफरेंस. नॉन प्रिमिटिव data type. Tell me one thing. If I'm using A, if I'm saying A dot, are you able to see any functions? कुछ दिख रहा है A dot? No. Let me do B dot. Are you able to see functions any? Yes, many. Because here the thing is that A is used to store the integer value. B is also used to store the integer value, but B is presented in the form of a class, and the name of that class is integer, and it contains and provides so many functions also. So your data type integer is presented as a object using the integer class. समझ में आया? Yes, Pradeep. तो वो आपको डेटा टाइप स्टोर करने की फैसिलिटी तो दे रहा है, लेकिन वो खुद भी अपने को बता रहा है कि मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट बन के आपके लिए काम कर रहा हूं. एंड यू कैन सी द ऑप्शंस. देखो यहाँ पे, आर यू एबल टू सी द डबल वैल्यू, इक्वल, फ्लोट वैल्यू, गेट, क्लास, इंटीजर, लॉन्ग. इवन यू कैन सी हियर बहुत सारे फंक्शन है. यू कैन सी हियर मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो. समझ रहे हो? यस और नो? मिन वैल्यू, साइज, टाइप, बिट काउंट, कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हो बाय पासिंग टू इंटीजर वैल्यूज. यस और नो? Yes. आप दो कंपेयर एक्स वाई पास करो, फंक्शन कंपेयर कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सारा गेट इंटीजर, ये सारे फंक्शन विद आर अवेलेबल इन द इंटीजर क्लास, बिकॉज इंटीजर इज प्रेजेंटेड एज ए क्लास ऑफ डेटा टाइप एंड वी कॉल इट नॉन प्रिमिटिव. तो जावा ने इसलिए बनाया गया था. लेकिन whenever you are using it integer for your storing the data, same time it is heavy. क्योंकि आप बताओ, जब आप इसमें वैल्यू स्टोर करोगे, आप वैल्यू स्टोर करो, लेकिन जब ये लोड होगी क्लास, when the class will be available, ये तो पूरे फंक्शन के साथ अवेलेबल होगी. यस और नो? Yes. जब भी आपने बी बनाया तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बी के पास सब कुछ है. क्या है? सारे फंक्शन, सारी वैल्यूज. लेकिन जब ए बन रहा है तो उसके पास क्या है? केवल वैल्यू. तो बताओ इनमें से कौन फास्ट होगा? Which one will be fast? अरे बताओ. जिसके पास ज्यादा बोझ होगा वो हल्का, वो उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी ना. Yes. तो A इज वेरी फास्ट. दैट्स व्हाई आप जब भी कैलकुलेशन करते हो तो आपका पर्पस ये थोड़ा था मुझे फंक्शन यूज करने, मुझे, आप तो कहते हो एक काम करो, ए में वैल्यू स्टोर करें, जस्ट मेक इट ए. और आपको कभी कंपेयर भी करना होता तो आप ऐसे कर लेते हो. पता है? देखो कैसे. यू आर नॉट यूजिंग द फंक्शन, आपको निकालना, आप करते हो ए इज ग्रेटर देन बी. यस और नो? Yes. आप फंक्शन यूज नहीं करते हो, लेकिन अगर आपको करने हैं तो बी आपको प्रोवाइड करता है. देखो, बी डॉट कंपेयर, और यहाँ पे कंपेयर करके दूसरी इंटीजर वैल्यू पास कर दो, तो बी कंपेयर आप कर सकते हो यहाँ पे ए. सो दे आर प्रोवाइडिंग यू फंक्शन फॉर डूइंग द ऑपरेशंस. जब व्हेन द क्लास इज प्रेजेंटेड एज ए क्लास, डेटा टाइप इज प्रेजेंटेड एज ए क्लास, तो इसका पर्पस ये होता था. इसको बोलते हैं प्रिमिटिव. तो कलेक्शन में जो आपके सपोर्ट करता है वो क्या सपोर्ट करता है? केवल नॉन प्रिमिटिव. गेटिंग माई पॉइंट? Yes. अच्छा, ये भी बात बताओ, केवल इसके लिए नहीं है. आप मुझे कोई एक डेटा टाइप का नाम बता दो. इस डेटा टाइप का पर्पस क्या होता है? So व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन? to store the Yeah. code. देखो, लेट मी Decimal values. Decimal डेसिमल values. वैल्यूज. इसको Decimal. करने के लिए भी आपके जावा बना है. उसका एग्जांपल क्या होगा? कैपिटल फ्लोट. क्या होगा? देखो, FLO लिख रहा हूं और कंट्रोल स्पेस करूंगा. आर यू एबल टू सी एनी क्लास विद द नेम ऑफ फ्लोट? जावा लैंग्वेज. Yes.
देखो सब डेटा टाइप के लिए बना हुआ है, इस्तेमाल नहीं करते हो बात दूसरी है, लेकिन सबके लिए बना है। कोई भी नाम उठा के देख लो, लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये एक डेटा टाइप होता है, दैट इज वी हैव लर्न इट यस्टरडे। क्या होता है? बुलियन। यस और नो? Yes. चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका भी डेटा टाइप है। लेट मी शो यू बी डबल ओ। आर यू एबल टू सी एनी क्लास विद द नेम ऑफ बुलियन? Yes. कोई भी ऐसा एग्जांपल दे दो मुझे, डबल, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, बाइट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। द पर्पस ऑफ दैट वो होता है ना कि उसने ये दिखाने के लिए रख दिया जावा ने कि भाई ये मत बोलो कि मेरे पास आई डोंट हैव एनी डेटा टाइप इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। है मेरे पास, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हूं, लेकिन अभी मैं इसको इसलिए नहीं निकाल रही हूं कि अगर मैं निकाल दूंगी तो आई एम गोइंग टू कंप्रोमाइज विद द परफॉर्मेंस। समझ में आया? Yes. तो इसीलिए जनरल लाइफ में आप देखना, कभी भी कोई कैलकुलेशन करता है ना, वो कभी भी इंटीजर नहीं यूज करता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, आप कभी भी करके देख लेना, वो इंटीजर ही करेगा। ठीक है? इज इट ओके? Yes. चलो अब इंटीजर क्लास का और फायदा भी बताता हूं। सपोज टेक द एग्जांपल, आपके पास एक वैल्यू है, मे बी यू हैव सीन माय वन असाइनमेंट, इफ नॉट सीन लेट मी टेल यू। आपके पास एक वैल्यू है, सपोज टेक द एग्जांपल, आई हैव अ वैल्यू strng string and I'm writing str। इसके अंदर मैं एक वैल्यू यूज कर रहा हूं, सपोज टेक द एग्जांपल दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये 4 आ रहा है, लेकिन इसका टाइप क्या है? क्या है टाइप इसका? String. String. Whenever something is wrapping in the double quote, it is called string. Yes or no? Yes. ध्यान से देखना, इसका नाम रखता हूं str1 and let me write another string str2। What is the value of str2? Let me make it 5। लेकिन दोनों क्या string है? अगर मैं str1 plus str2 करूं, आंसर क्या आएगा? Tell me। 9. str1 plus str2, क्या आंसर आएगा? 9. नहीं, 4, 5. ये आएगा 45, बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा कॉन्केटिनेशन। हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में कल, यू गाइस आर नॉट रिवाइजिंग। तो देखो 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 देखो, लेट मी रन इट, देखो क्या प्रिंट करके आएगा? 45। यस और नो? Yes. क्योंकि ये क्या हो गया? कॉन्केटिनेशन। व्हेनेवर यू हैव अ स्ट्रिंग इट विल बी कॉन्केटिनेशन। समझ में आया? If you want to make a arithmetic calculation, these 4 and 5 should be treated as a numeric। Yes or no? Yes. Yes. तो पता है कैसे कर सकते हैं? इंटीजर क्लास ने एक मेथड दिया आपको। सो अगर वो मेथड होता ही नहीं, उसको रखने के लिए कोई क्लास ही नहीं होती, तो आप कैसे करते? मैं बताऊं क्या मेथड है? मेथड है, इफ यू आर वांट टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर, देखो नाम क्या है उस क्लास का? नाम है intgr। यही क्लास है आपकी, और इसके बाद एक फंक्शन होता है जिसका नाम है parseInt। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस वन? Parse in. फंक्शन का नाम पार्स। व्हाट इज द इनपुट पैरामीटर टाइप? String. स्ट्रिंग। व्हाट इज द रिटर्न टाइप? Int. ये क्या करता है? अगर इसमें कोई स्ट्रिंग पास कर दो, अगर वो इंटीजर में यानी न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो सकती है, इट कैन बी कन्वर्टेड, तो कन्वर्ट कर देगा। अब ये उम्मीद मत करना इसके अंदर आप प्रदीप लिख दो। अब प्रदीप क्या न्यूमेरिक में बन सकता है? नहीं, लेकिन 4 तो बन सकता है ना, स्ट्रिंग का 4 में न्यूमेरिक में बन सकता है। यस और नो? Yes. तो ये वो काम करता है आपके लिए। सो दैट्स व्हाई अभी मैंने असाइनमेंट दिया भी था, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्ट्रिंग, यू हैव टू गेट द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन ए स्ट्रिंग। तो वहां पे इसी का इस्तेमाल करना था। देखो इसके अंदर मैं लिख दूंगा str1। ये जब कोड चलेगा तो str1 को किसमें बदल देगा? Numeric. न्यूमेरिक में। आप चाहो तो इसे किसी न्यूमेरिक वेरिएबल में रख लो, या मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, क्या मैं इस str1 की जगह ये पूरा सीधा ये लिख दूं? यस और नो? तो क्या करेगा ये कोड? क्या करेगा? यहां पे प्लस करने से पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यस और नो? Yes. नहीं, आप लोग कंफ्यूज आते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, सेपरेट काम करता हूँ। मैंने आई हैव राइट साइड कन्वर्टेड इट, और मैंने एक वेरिएबल बनाया ई। अब ई में क्या स्टोर होगा? इस स्ट्रिंग का न्यूमेरिक वैल्यू। यस और नो? Yes. सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू विद माय str2। आई विल क्रिएट अ वेरिएबल एंड आई विल मेक इट f। f में काम है जो भी str2 में वैल्यूज है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? Numeric. अब now I'm going to in my SOP I'm going to make a sum of E and F। अब E and F क्या आएगा? And अब आएगा 9। yes. Yes or no? Yes. So got the point? अब इसीलिए ऐसा बनाया गया। अगर मेरे पास क्लास, फंक्शन कहाँ लिखोगे? You can write the function within a class। Yes or no? And that function was related to the integer so that you can convert a string into an integer। So that's why they have generated a class कि भाई इससे related जो भी function होंगे integer class में डाल दो। अगर बंदे को the person want to use the functions here, they can use the function। नहीं use करना है, simply use the primitive data type।
to make the performance high. Is it okay? Yes, sir. चलिए, तो ये आ गया हमारा जो टॉपिक नहीं होता है, इसीलिए जावा लर्निंग इज वेरी इजी, जावा टीचिंग इज वेरी टफ। आप लोग का काम बहुत आसान है, सही बताऊं, माय रोल इज वेरी टफ टू हैंडल द टॉपिक्स इन सच अ वे दैट यू कैन रिलेट इट इच अदर। हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करता है, पता है। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, फॉर टीचिंग दिस टॉपिक, आई हैव टू कवर वन मोर टॉपिक दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। लेकिन अगर मैं उसको करूंगा तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे। सो दैट्स व्हाई दैट इज माय, यू कैन से, जॉब टू मेक द थिंग्स इजी एंड ट्राई टू रिलेट ईच अदर। तो मैं वो करूंगा, दैट इज ओके। चलिए, दिस थिंग इज क्लियर। सो यू गॉट द पॉइंट व्हाई आई हैव रिटन इट इंटीजर, बिकॉज कलेक्शन ऑलवेज सपोर्ट, कलेक्शन ऑलवेज सपोर्ट नॉन प्रिमिटिव टाइप। Non-primitive. ठीक है, चलिए, यहाँ पे प्रॉब्लम, जहां प्रॉब्लम बनी वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व करो। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो हमने ये तो देख लिया दैट इट इज गोइंग टू कवर द डुप्लीकेट, इट्स नॉट गोइंग टू कवर। सो नाउ व्हेनेवर यू आर गिविंग द जेनेरिक टाइप, नाउ दीज लाइंस बिकम इनवैलिड। क्या आप ऐड कर पा रहे हो किसी और डेटा टाइप को? No. आर एबल टू ऐड? तो आपकी लाइन हो गई आसान। अगर मैं यहां लिख दूं स्ट्रिंग, सो नाउ द स्ट्रिंग वैल्यूज विल बी ओके। इससे एरर चली गई, यस और नो? Yes. So now it means you can decide what will be your generic data type. So that is, you can say, feature, and you will see that whenever I'm using the generic, अपने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे येलो कलर नहीं आ रहा, देखो इसमें आ रहा है, क्यों? Still I'm using the concept of non parameterized। तो यहाँ पे भी कर दो, देखो। So that is the best। आपको देखो जरूरत पड़े तो you can do anything, but that is advisable, I have shown you here। Is it okay? हाँ जी, क्लियर है? Yes. Yes. Great. Now, as I have in the starting, we have already learned that we can run this with the help of a loop, but for collection, we have a specific loop. So we should use that loop. That is the only purpose. So collection mein dekho, if I want to print all the elements here, simply I can do one thing. For collection print करना है, इसको यहाँ से SOP हटा दो, otherwise it is going to create a problem। यहाँ पे भी हटा दो, and let me print the values। देखो यहाँ पे print करता हूँ, simple क्या लिखना था? Colon, what is the name of the collection? Array list। Yes or no? यही नाम है मेरा। Yes. Yes. And what is the type of every variable? हर variable का type क्या है? Integer। That's why I'm declaring a integer variable। Is it okay? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहूँ तो int कर सकता हूँ, क्यों? Here we are not defining in the collection, I'm using a variable to store the value। Yes or no? Yes, Pradeep. लेकिन यहाँ पे जब कलेक्शन में उसे डिफाइन करेंगे तब इंटीजर करेंगे, वहां पे एक दिक्कत है। बट हियर यू कैन डी, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया इंटीजर यहाँ पे दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स, लेकिन यहाँ पे तो मुझे स्टोर करने के लिए डिक्लेयर करना था। बट द पर्पस इज सेम, दैट यहाँ पे इंटीजर करेंगे, वो भी 4 स्टोर करेंगे, एंड हियर ए इज गोइंग टू स्टोर द 4 आल्सो। तो देखो अगर मैं ये चलाऊं तो ए में क्या आएगा? ऑल द वैल्यूज। यस और नो? ये देखो, सॉरी, यस और नो? Yes. हाँ, चलाने से पहले ही बोल दो, 453 आ गया। एंड सेम थिंग आई कैन यूज इन माई सेट। ये देखो, केवल सेट लिख दो, यहाँ पे लिख दो सेट, एंड हियर द ए वेरिएबल यहाँ पे भी रहने दो, वो वेरिएबल ऊपर है, नीचे इसको रहने दो। देखो व्हाट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड हियर। एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर दूं सो दैट यू कैन सी द, ओ आई फॉरगेट टू राइट दिस वन, ये ऊपर वाला ही प्रिंट कर देता हूँ। इट शुड बी सेट, राइट? लेट मी रन इट। It's working 4 5 only because 4 and 5 are duplicates. Yes or no? Yes. So anybody have any question? Jaldi jaldi bolo. Anybody have any question? No. Great. No. No. So now we are going to cover the last, you can say, collection, and we have that sufficient time for that. That is called map, and that is very interesting. Trust me. And that is called map. I'm creating a separate class for that map tab. So now, oh, I just forgot to make a main function here. So let me make a main function. Okay. So now you can see till now, whenever you are storing the element, you are storing some values 4, 5, 3, 4, 4, 5, 5. Yes or no? You are storing some values. Yes. Chalo, can you tell me one thing? I'm trying to store some values 4, 500. This one. And I'm storing, suppose take the example of 30, or let me take the example of 28. What we are trying to do in my array list, I'm storing some values. Yes or no? Yes. 4, 500, 3. It is 3 lakh or 30,000? 3 lakh.
Haji? Yes, 3 lakh. Okay, tell me one thing. What is this 4 value? It is what it is presenting. It is presenting what? It is your salary. सब डर जाएंगे, नहीं 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 प्रदीप, 4 सैलरी कैसे बोल रहे हो? या तो उसके आगे यूनिट लगाओ, 4 करूंगा. This 4 is what is unit? What do you think that what can be 4? आपको क्या लगता है 4 क्या हो सकता है? किसी का रोल नंबर. आप सैलरी तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना? यस और नो? अरे हाँ Yes. ना तो बोलो यार, No, no, no. है ना? देखो सबको पता है, लेकिन इसमें भी डर है. या तो कुछ लोग ऐसे डर है कि हाँ ना 4 है, वो सोच रहे हैं 4 का मतलब 4 भी सैलरी. अरे भाई 4 रुपए है, 4 रुपए, दैट इज नॉट योर सैलरी. सो इट कैन बी सैलरी, नो सॉरी, इट कैन बी आईडी, इट कैन बी रोल नंबर. आप गेस कर रहे हो. व्हाट कैन बी 500? 500 क्या हो सकता है? Number. हाउस नंबर. यस यस प्लीज. House number. or किसी का fixed. हाउस नंबर हो सकता है 500 रुपए के नोट की बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. व्हाट कैन बी दिस, व्हाट कैन बी दिस डिजिट? Yes, It can be salary. देखो यहाँ पे, देखो उसकी आवाज देखो, खट से आई लड़की की आवाज, है ना, कि सैलरी सैलरी, ये सैलरी होगी, ये सैलरी चाहिए. दैट इज ओके. व्हाट कैन बी 28? Roll number. इट कैन ID. बी रोल नंबर. देखो सब लोग गेस कर रहे हैं. अगर मैं बोलूं आपकी जो 28 है वो एज है, तो आप कहोगे हाँ प्रदीप वो भी हो सकती है. यस और नो? Yes. Yes. Actually what I'm trying to convey here, whenever you are using any array list or set, actually you are storing only the values. You are storing only the values. But if you want to make sure that what is the purpose of this value, that you can also store it. Okay, you can compare with one thing. Whenever I create a variable, जब भी कोई variable बनाता हूं मैं, यहाँ पे मैं int a लिखता हूं. आपको पता है that is not a good approach. Variable का नाम ये नहीं होना चाहिए. Variable का नाम क्या होना चाहिए था? ID. Yes or no? Yes. That is more meaningful. Yes or no? Yes. Yes. Still, I will give the idea. Whenever you are giving any assignment or you are doing any assignment in your interviewer, आप लोग बहुत गंदा काम करते हो. I'm not saying that because you do not know. आप लोग 2 input number लेने होते हैं, उनके नंबर नाम क्या लेते हो? A. Don't make. Try to make a practice input number 1. Now tell me, anybody can understand this thing. आपका इंटरव्यू कोई ले रहा है, suddenly one new developer come to the interview and he want to read your program. He can simply understand that you are taking some input number. Yes or no? Yes. तो आपका वेरिएबल का नाम should be defined in such a way it should be meaningful. अब देखो मुझे नंबर का ऐड करना था. आप नंबर तो ऐसे भी कर सकते हैं. लोगों की आदत है, they make it s. अरे इसका नाम अगर सम रख दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं? Yes or no? Yes. So only the purpose of the variable name is to make the values meaningful, so that you can tell me कि इसमें जो values रखी है, what is the purpose of that? So now same concern come into the mind of the Java collector. Java collector means the person who was designing the collection. कि sometime I want to store the values, but at the same time I want to store this information. That what is the purpose of this information? तो उसने एक collection बनाया, and the person and the collection has had the capability to store the two information together. The value as well as what is the purpose of that, and we call that purpose as a key. We call that purpose as a key. तो map ऐसे collection बनाता है कैसे? First of all, tell me, for map purpose, you can say the name of the class is HashMap. इसका syntax क्या होता है? KV. KV का मतलब समझे? You got the point, KV? Key value. Key value. And whenever you are declaring the, you can say map, it is going to store two things. अभी तक आपने पढ़ा, you are going to store only one value. That is going to be, you can say, only the value. यहाँ पे मैं इसको हटा दूं ना, इससे भी काम चल जाएगा. ये देखो. Because now what will happen? By default, the key will be anything, and by default, the value can be anything. Yes or no? मेरी बात समझ में आई? Yes. आपकी की भी कुछ हो सकती है, वैल्यू भी कुछ हो सकती है. How we store the data? Let me show you. In map, the name of the function is mymap. Not add here. The name of the function is called put. What is the name of the function? Put. And here the first thing is called the key, and second thing is called value. तो देखो मैं आपको, I'm going to store the same data here. मुझे store करना, I want to store 4. What is the purpose of that 4? I'm going to put in my key, and key I'm defining just like a string. क्योंकि string में define करना आसान है. क्या लिख दूं? ID. Yes or no? So now what is 4? Anybody can tell me what is 4? ID. ID. Very good. ID. I want to store a value here, 500. What is 500? I will tell with the help of my key. Actually, this is, you can say, let me, you can say coupon, or you can say gift. Coupon. I can give anything. Yes or no?
Yes. What is, and your favorite one? You will say, Pradeep, can you keep on adding the zeros? And then you can say, Pradeep, it's my salary. So SALARY, salary. This is your salary. So now the values are very meaningful. Anybody can understand yes or no. Yes. Okay, even because I told you that you have an option that you can use any type of key, any type of value. You are not restricted to store only the numeric. You can store the credentials also, like in your automation, username. You can store in a collection username, and here in the double quotes, it is string Pradeep. Is it okay? Yes or no? Yes. And you can use this collection to store your test data also. Username. I want to store the value of password for my application. Yes, this one. It want to numeric. Let me make it numeric. If you want, you can make it this one. Password too. Now you can store. Suppose take the example. You know that whenever you are working in the automation, your automation application is same, but the URLs change according to the environment. Dev में अलग हो जाता है, UAT में अलग हो जाता है, production में अलग. Yes or no? Yes. So how you are going to store it, make it dynamic. आप क्या करो, एक variable बनाओ, app URL, and here you can give the value according to your, you can say your environment. And whenever you want to change it, आप change कर लो. जैसे मैंने लिख दिया URL ऐसे HTTP and dev. Is it okay? Yes. So now the benefit, and that's why I'm saying that it is widely used in automation whenever you want to store the data in one variable. So in the single my map, you can store multiple set of data and you can use anywhere in your project. That is the only purpose. Okay, now again, the thing is that they have given us flexibility, but if you want to make sure that your data is, you can see you want to restrict that only this type of data should be stored, so that you can restrict with the help of key. I'm saying that my key will always be string and my value will also always be. So now you can see your array is not coming in this one, but array is coming here. Yes or no? Yes. So again, I'm telling you a standard thing, but as I told you, how you are going to take the advantage, that totally depends on you. समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? Yeah, Pradeep. If I'm going to make it integer, I can make the key integer, so key is string int e. So now above three values are valid. Yes and no? Yes. तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, that is totally depends. I'm giving you the, you can say, I'm just giving you the sword. Okay, how you are going to play, how you are going to fight, that totally depends on you. मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए. आप तलवार से चाहे लड़ाई करो, चाहे घर में सब्जी काटो. I told you everything here. So that is the only purpose. Now the question is that you, whenever you want to store the data, you store in the way of key and value pair. And whenever you want to fetch the data, आपको salary चाहिए. So you can simply say that map dot get, and the get, what you have to pass, you have to pass the key. Oh, sorry, the name of my variable is my map. My map dot get, it is expecting a key. Yes or no? Yes. आप इसमें की डालो, आपको वैल्यू रिटर्न करेंगे. आई वांट द सैलरी, SALARY. सो इट इज जस्ट सिंपली गिविंग द फीलिंग ऑफ वेरिएबल. कुछ वेरिएबल की फीलिंग नहीं दे रहा ना, वेरिएबल को डालो और उसकी वैल्यू ले लो. यस और नो? Yes. But you are using in the collection. So that is the benefit. So now I'm going to print this value. So whenever I'm going to print this value, it will return salary. And that is, I don't know, that is 330 lakh and whatever. जो भी है, it is going to return you. देखो. Yes or no? Yes. Yes. If I'm saying that ID, yeah, ID return कर देगा. So the purpose of here, so you can say you are just storing the data in the form of value or key value pair, and whenever you want to get any value, you can get it. Here the special thing is that at any point of time you can update your data. तो ये इसका बहुत बड़ा benefit है. Suppose take the example in your automation. If you want to change the data, आपने बोला मैं data को change करता हूँ, मुझे कुछ और data चाहिए, update करना है. So if you are going to write the same line thing here, ID equal to 5. So what will happen? When the control will come to this line, जो आपकी ID value थी, now the value will become 5. 5. So because here in the another way, you can say that in your map, IDs are, or you can say keys are unique. Key cannot be duplicate. अगर आपकी key is already there and you are trying to update some value, तो वो नई key नहीं बनाएगा, पुरानी key की value को क्या कर देगा? It is going to update it. Is it okay? आपने देखा, अगर if I'm going to print this statement after this line, तो क्या print होता? 4. And when I'm updated after that print करूंगा, तो same thing will be printed 5. Fine. Getting my point?
Yes. तो सेम थिंग, सो दैट इज द पर्पस इन योर ऑटोमेशन। आपने कुछ काम किया, कोई टेस्ट डेटा है आपका, अचानक कोई रन टाइम पे कोई डेटा बन गया है, सपोज टेक द एग्जांपल एंड यू वांट टू प्रोसीड विद अदर टेस्ट केस, तो आप क्या कर लो, फॉर शॉर्टर टाइम बिंग हियर यू कैन स्टोर इट, है ना, कोई एक वेरिएबल बना लो, देखो ऐसे, देखो बहुत फायदे इसके, टेम्प वेरिएबल, और उसमें वैल्यू स्टोर कर ली। अब कहीं भी मुझे अपने टेस्ट केस वेयर एवर आई नीड दिस वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, केवल यही तो करना है, यस और नो। Yes. रन टाइम पे कस्टमर की कोई आईडी बन के आई एंड यू वांट टू यूज इन योर फर्दर कई प्रोग्रामिंग, तो आप ये वेरिएबल बनाओ कस्टमर आईडी 5 स्टोर करके रख लो, जहां कहीं चाहिए वहां पे क्या लिखाओगे, माई मैप डॉट गेट, यस और नो। तो रन टाइम पे यू कैन स्टोर, गेट द वैल्यूज यू कैन स्टोर एंड यू कैन यूज एनीवेयर, और आपको पता है कहीं और ढूंढने नहीं जाना है, वो एक ही कलेक्शन में है, क्या नाम है, माई मैप, यस और नो। Yes. ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग अबाउट द मैप इज दैट every time this question is asked in the interview, can you write a program to print all the elements from the array list? That is simple. Can you print a Java code to print all the elements of the set? Now the question is that can you print all the elements of a map? तो यहाँ पे क्या होता है, you can see here, I told you this for each loop is designed for the collection. बताया था yes or no? Yes. But here I want to tell you very uninteresting thing. And that is that actually map is learned under the topic of collection, but it is not a part of collection. मैप कलेक्शन के टॉपिक में पढ़ा जाता है, लेकिन इसको कलेक्शन का पार्ट नहीं मानते। समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली यूजिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज। समझ में आया? Yes. Yes. तो इसीलिए इसको पढ़ा तो जाता है लेकिन बताया नहीं जाता, ये बोला नहीं जाता है कि वी आर, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कलेक्शन, क्योंकि देखो ये कलेक्शन तो है लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो इट इज, इट हैज ए एंट्री, ये एक एंट्री को प्रेजेंट कर रहा है, यस और नो, जिसमें दोनों इंफॉर्मेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या केवल ये इंफॉर्मेशन आपको दे दूं तो काम की है, क्या केवल वैल्यूज दे दूं काम की है, कि दोनों एक साथ ही मीनिंगफुल है? दोनों एक साथ में। एक साथ। अगर मैं आपको दे दूं मेरे पास कीज पड़ी हैं, आईडी, गिफ्ट, कूपन, सैलरी, टेम्प, कहोगे मैं क्या करूं इनका? मैं दे दूं वैल्यू 4, 500, 3 लाख के, आप कहोगे मैं क्या करूं इनका? भाई मुझे क्या मतलब है इनका? आप अगर मैं दे दूं आईडी 4, आप बोलोगे हाँ आईडी 4 है, यानी मुझे एक वैल्यू मिल रही है जो आईडी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दिस मैप इज नॉट डायरेक्टली द पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो इसको ट्रैवर्स कैसे करें? तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इन मैप वी हैव फ्यू फंक्शंस हियर। सो पहला फंक्शन मैं इसको पहले यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स। तो आपके पास क्या क्या फंक्शन, लेट मी शो यू। यू हैव मैप डॉट add put function to add map dot get, और आपके पास we have other function map dot entry set। ये देखो, अच्छा मैंने मैप तो आपको प्रिंट करके दिखाया नहीं, लेट मी शो द प्रिंटिंग द मैप। देखो मैप प्रिंट करके कैसा लगता है, आर यू एबल टू सी द एंट्रीज? Yes. तो देखो एंट्री प्रिंट हो रही है ना, गिफ्ट, कूपन, 5, दिस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब देखो अगर मैं, इफ आई वांट टू, आई एम इंटरेस्टेड टू गेट द कीज ओनली, मुझे केवल की पता करनी है, दैट इज नॉट गुड, लेकिन चलो पता करनी है। द फंक्शन इज दैट यू कैन से की सेट। अगर आप ये करोगे, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन, बताओ व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन? अरे बंधुओं को String केवल set. स्ट्रिंग नहीं है, कोलन के बाद क्या लिखा है, Set. सेट ऑफ अ स्ट्रिंग, Set. यानी कि इसका रिटर्न टाइप इज ए कलेक्शन ऑफ टाइप सेट ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब ये जो की सेट रिटर्न करता है, जितनी भी आपकी कीज है उनका क्या रिटर्न करेगा, सेट, कलेक्शन। ठीक है, तो देखो आपको प्रिंट करके दिखाओ, ये देखो आपको प्रिंट करके दिखेगा, यस और नो, कीज Yes. प्रिंट हो गई। अगर केवल वैल्यूज चाहिए, सो देन यू कैन से डॉट वैल्यूज, ये देखो, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट द वैल्यूज। ठीक है, अगर आपको दोनों चीज चाहिए, दैट इज यू आर एबल टू सी, आप देख पा रहे हो, लेकिन उसको करने का तरीका भी है, दैट इज कॉल्ड एंट्री सेट। दोनों चीज मिलेंगी, देखो, लेट मी प्रिंट इट, देखो क्या प्रिंट होता है, आर यू एबल टू सी, यस और नो? Yes. Yes. अब आपको यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, एक्चुअली दैट शुड नॉट बी टीच, क्योंकि मैंने आपको जो बताया उससे आपको मुझे लॉजिक बताना है। आई डोंट नो हाउ मेनी कीज आर देयर, बट वट एवर फंक्शन आई टोल्ड यू, जब अभी तक मैंने जो फंक्शन बनाया आपको, पुट, गेट, एंट्री सेट, की सेट, वैल्यूज, इनकी यूज से क्या आप मुझे प्रिंट करा के दिखा सकते हो कि मेरे उसमें कितनी भी कीज पड़ी, आई डोंट नो, मुझे सारी वैल्यूज चाहिए, उसकी सारी कीज और वैल्यूज दोनों चाहिए, सेपरेट, सेपरेट चाहिए, मतलब समझ रहे हो? आई वॉन्ट टू सी दैट, मुझे नहीं पता उसमें की वैल्यू क्या है, मुझे सारी कीज भी चाहिए, सारी वैल्यूज भी चाहिए, या आप कह सकते हो मुझे सारी कीज और वैल्यूज
चलो पहले मुझे सारी वो चाहिए आपकी कीज और वैल्यू एक साथ चाहिए। हाँ, दैट इज असाइनमेंट। सॉरी, कैसे करेंगे बताओ? चलो मैं बताता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मुझे किसी एक वैल्यू को निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? मैप डॉट गेट के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? यहाँ पे क्या पास करना होता है? की तो अगर मुझे किसी तरह सारी की पता चल जाए तो मैं अलग अलग उसकी की और वैल्यू अलग अलग निकाल सकता हूँ। यस और नो? यस तो देखो मैं एक ट्रिक अगर अपना लूं, क्या इसको ऐसे ही भूल जाऊं। आई एम राइटिंग ए फॉर लूप। ध्यान से देखना, दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द। इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट साइड में कलेक्शन रख सकता हूँ, है ना? एंड कलेक्शन इज ओनली टू, लिस्ट और सेट। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, आप मुझे ध्यान से बताना, माई मैप डॉट की सेट, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करेगा? कीज सारी कीज रिटर्न कर देगा। कीज या अगर लेफ्ट साइड में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे पता है की मेरी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे रख देता हूँ इसका नाम, वेरिएबल का नाम ही करंट की कर देता हूँ। तो जब ये लूप चलेगा, सो आई विल गेट ऑल द कीज हियर वन बाय वन। यस और नो? Yes. अब देखो मेरी ट्रिक, अगर ये मिल जाएगा तो इस एसओपी स्टेटमेंट को यहाँ से कट करो, यहाँ पे डालो, और क्या करना है, जो भी की एक एक करके मिलती जा रही है उसमें यहाँ पे पास कर दो, यस और नो। Yes. और एक काम उसने बोला था अलग अलग प्रिंट करके दिखाओ, तो पहले क्या करो, क्रिएट ए वेरिएबल। आप बोलो ऐसे बनाओ, स्ट्रिंग की वेरिएबल बनाओ, और की के अंदर जो की मिल रही है पहले उसको स्टोर कर लो अलग से। यस और नो? ये की तो मिल रही है, यस और नो? और सॉरी, की में तो ये मिल जाएगी करंट की। मैं भी क्या कह रहा हूँ, एसओपी में अंदर ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करंट की मिलूंगा तो करंट की मिल जाएगी, यस और नो? ये व्हाट Yes. इज हैप, चलो पहले मैं प्रिंट करूँ, लेट मी शो यू व्हाट आई वांट टू टेल यू। मैंने यहाँ पे प्रिंट, इट विल रिटर्न द करंट की ओनली, यस और नो? ये देखो रन Yes. करता हूँ, तो मेरी इससे सारी की प्रिंट हो जाएंगी अलग अलग। मुझे वैल्यू भी अलग अलग प्रिंट करानी, दैट इज द असाइनमेंट। तो मैंने देखो की करा, उसके बाद देन आई एम गोइंग टू राइट एसओपी, और यहाँ पे एक ट्रिक लगाऊंगा, क्या की तो मिल चुकी है, मैं क्या करूँ, माई मैप डॉट गेट, एंड वट एवर की यू आर गेटिंग हेयर, आई विल पास द की हेयर। तो अगर मैं जो की आपको एक एक करके लूप में मिली अगर मैं पास कर दूं, तो इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, यस और नो? ये देखो, Exactly. Yes. एग्जैक्टली, थैंक यू। ये देखो, तो अब आपको दोनों वैल्यूज अलग अलग मिल गई ना, and Yes. now you can do it, and that is the assignment, and that is the, you can say, interview question. So that is asked, and only the purpose that कि उसका पर्पस ये था कि आप मुझे ये दिखाओ कि मैं अपने लूप से, अब देखो इससे फर्क नहीं पड़ता मेरी कितनी की है, आपको देखो मैं की बढ़ा दूं अपने में, ये देखो, क्योंकि मेरा लूप क्या करेगा, रन टाइम पे सारी की निकालेगा एंड देन देयर वैल्यूज, यस और नो। Yes. तो देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, मैंने की बना दी, मैंने की का नाम सम गार्बेज है। देखो मेरा प्रोग्राम अब भी चलेगा गुड, यस और नो? Yes. हाँ, ये मत ढूंढने जाना कि वो नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। वेन एवर यू आर एडिंग सम की वैल्यू पेयर, वो अपने हिसाब से ऑर्डर करता है पहले किसको दिखा रहा है, ठीक है, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, बट यू गॉट द पॉइंट, यस और नो? Yes. एंड दिस Yes, इज Pradeep. आस्क्ड इन द इंटरव्यू, दैट हाउ यू कैन get the values and keys separately in the same code, ठीक है? तो Yes. अगर वो एक्चुअली असाइनमेंट वो ऐसे देता है कि मुझे ऐसे प्रिंट करके दिखाओ कोलन और अलग अलग, तो उसको क्या कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, करंट की प्लस, ये तो एसओपी का खेल है, कोलन लगाता मैं, यस और नो? Yes. एंड आफ्टर दैट ये जो मैंने नई लाइन में प्रिंट किया इसको यहीं प्रिंट कर दूं, यस Yes. और नो? तो Yes. एक्चुअली व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, कभी कभी वो आपको इसमें भी फंसा देते हैं कि यार मुझे प्रिंट करके ऐसे दिखाओ की वैल्यू पेयर ऐसे, देखो इट विल बी प्रिंटेड इन अ नाइस वे, यस और नो? Yes. So that is the Yes. only trick. You are getting the key and then you are. So that is, you can say, all about your collections here. ये आपका collection. I will come to that point also. इसमें मैं एक point वापस आऊंगा collection में. I will show you that 99%, 99.9% you will see that whenever you are making a collection, तो यहाँ पे आपने लिखा है hash map. यहाँ पे भी लिखा है hash map. आप यहाँ पे कभी hash map नहीं लिखते हो. यहाँ simple लिखते हो map. ऐसा क्यों लिखते हो? इसको जानने के लिए मिलते हैं नए एपिसोड में इसी सीरियल के कमर्शियल ब्रेक, ठीक है? तो दैट इज अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो हम इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर राइटिंग इट मैप एंड एट द लेफ्ट साइड वी राइट लिस्ट हियर, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक एंड दैट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो मैं हर सेशन को बोलता बट नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द ओनली टॉपिक मोस्ट ऑफ द पर्सन फील इट
कि यार ये क्या हो गया, जावा में ये क्या पढ़ा दिया, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट easy. I can only help on that before starting the session I can share you one video that you can go through and make it easy. Is it okay? Yes. Okay, Pradeep. Chaliye, so I'm binding the session and with the commitment, please revise